Hi guys, welcome back to another video from BioBuddy, and in this video we will be studying about the mechanism of internal and external respiration, guys. So in this video what I have drawn is, this is the heart, this is the pressure of the oxygen and carbon dioxide separately in alveoli, and this is the pressure of the oxygen and CO2 inside your tissues, inside your body. So this whole is the mechanism of how the internal and external respiration is taking place. I have already told that in an individual video about the internal expiration and the inspiration. Both the videos are made. So guys, I hope you have seen those videos, and after you watch those two videos, if you come back to this video, I think this will be a very clear picture. You will understand that two videos in a better form if you start watching those two first and then they come to this, right? So let's just get started. In this first, what is happening, we have shown the heart. Heart has 4 chambers, right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle, right? So these are the 4 chambers which are present. So in this video wise, what is happening, the 4 chambers which are present, these 4 chambers, what they are doing is, these 4 chambers, you all know this chamber belongs to the deoxygenated part, this belongs to the oxygenated part. So the deoxygenated part, let's just first start it. In this part of the heart, what comes? Oxygenated blood. Through the left ventricle, the oxygenated blood is pumped into the aorta, which is also called a systemic capillary. In the aorta, obviously, if it is pumping 100% of the oxygenated blood, so how will the pressure of the oxygenated blood be? It will be 100 mmHg, right? Obviously, the partial pressure of CO2 will be less in this case. CO2 का कम होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ से कौन सा ब्लड आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको कोई दे रहा है तो प्रेशर किसका ज़्यादा होगा? ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं. So here in the aorta, the pressure of the oxygen is 100 mmHg, and here it is 40 mmHg. Now what is happening here? The pressure here is 40 mmHg. So now what is happening? The blood is going here. When the blood is going here, it is exchanging the tissue. It is exchanging the blood with the tissues of your body. Inside the body tissues, what is happening? Inside the body tissues already, as the oxygen is less and as the CO2 is more here, we can see the partial pressure of oxygen is 40 here and partial pressure of CO2 is 45, which is more here, CO2 more. And in the aorta, which is coming from the heart to the tissues, what is more? The oxygen is more. So what is happening, as we know, the diffusion, the main funda of diffusion is that it will go from high pressure to low pressure. So high pressure is of oxygen. So high pressure से low pressure में कौन जाएगा? Oxygen, because here the pressure is high. It will go from this side to this side. High to low pressure it will go. So therefore now this blood becomes oxygenated, and this process is called as systemic circulation. Systemic circulation, SC stands for systemic circulation. And from the tissues, what will come inside? As the pressure of in the tissues of CO2 is more, that is 45 mmHg. So the 45 mmHg is obviously more than 40 mmHg. So CO2 will travel from high partial pressure to low partial pressure. So now if it is rich in oxygen, if it is rich in CO2, अब 100 टिश्यूज़ में हो जाएगा और 40 किस में हो जाएगा? सिस्टमिक सर्कुलेशन में. तो अगर यहाँ पे जब उसका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, किसका? इसका डिक्रीज होकर CO2 का इंक्रीज होता है, तो व्हाट विल दिस बी बिकम नाउ? दिस विल बिकम द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट अगेन. फ्रॉम हियर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज मूविंग डाउन and it is going to the tissues. Now the PO2, that is the partial pressure of oxygen, is 100 mmHg and the pressure of carbon dioxide is 40. So pressure किसका ज़्यादा है? ऑक्सीजन का. बट यहाँ जाते जाते हम देखते हैं कि यहाँ पे जब एक्सचेंज होने की बारी आती है, then we see that ऑक्सीजन का partial pressure in the tissues is 40 and CO2 का 45. किसका ज़्यादा हुआ? CO2 का. बट हम क्या देखते हैं? एक्सचेंज करवाना है हमें इसके बीच में और इसके बीच में. सो ऑक्सीजन जब एक्सचेंज करेगा तो वो कहाँ से कहाँ जाएगा? फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर. हाई कहाँ पे? इनसाइड दिस, इनसाइड द aorta. सो फ्रॉम हाई इट विल मूव ऑन टू द लो. तो अब किसका ज़्यादा हो जाएगा? टिश्यूज़ का ऑक्सीजनेटेड कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा. बट यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इट इज़ मोर, तो इट विल ट्रैवल फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. तो वो आ जाएगा यहाँ पे. तो अगर इधर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया, तो क्या हो जाएगा? ये दिस विल बी नाउ बिकम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड.
So now the partial pressure of deoxygenated blood, that is PCO2 is 45 and O2 is 40. So technically दोनों में से कौन कम है? ऑक्सीजन. तो ज़्यादा कौन सा हुआ? CO2. तो कैसा हो गया ब्लड? कार्बन डाइऑक्साइड रिच. नाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड विल मूव टू द एल्वियोलर कैपिलरी, और वो कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम में. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया. नाउ फ्रॉम दिस थ्रू द वेंट्रिकल्स इट विल गो इनटू द वेंट्रिकल्स. यहाँ पे क्या होते हैं? यहाँ पे जो ओपनिंग्स होती हैं, थ्रू दैट इट विल गो टू द राइट वेंट्रिकल. नाउ फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इट विल मूव एंड वी विल मूव टू द एल्वियोलर कैपिलरी, पल्मोनरी. उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? एल्वियोलर कैपिलरी में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन पहले ही कम था, CO2 का भी कम है, पर ये क्या है? एल्वियोलाई. ये क्या है? अब लंग्स से एक्सचेंज करेगा. अब लंग्स में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 105. तो इधर क्या होगा? 105 अंदर आएगा और ऑक्सीजन का 40 जाएगा इधर वापस. और यहाँ पे क्या हो रहा है? ये क्या है? ज़्यादा. ये क्या है? कम. तो ये क्या हो जाएगा? इट विल गो हेयर एंड इट विल गो हेयर. Is it very? I think it is very clear. So now this will become oxygenated, it will become oxygen rich, and thus oxygen now goes from the right atrium again to the left ventricle, and this process will go on again and again. So this is a sequence of how the mechanism of internal and external respiration takes place. If you want to see it, guys, just watch it again, because this is somewhat confusing to some people, but it's very simple. क्योंकि हमें सिर्फ इसमें डिफरेंशियल प्रेशर देखना है. जिसका प्रेशर ज़्यादा वहाँ से ऑक्सीजन वापस जाएगी, जिसका प्रेशर कम वहाँ से वो अंदर को जाएगी. तो हमें ये चीज़ देखनी है कि प्रेशर जिसका PTO2 फॉर एग्जांपल इधर ऑक्सीजन का ज़्यादा है तो वो ज़्यादा से कम में जाएगा, और ये मेक श्योर करना है कि ये देखो ये कम ही है. तो प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल. फ्रॉम हेयर it is going to the right atrium, from the right atrium to right ventricle, from the right ventricle through alveolar capillary it is again going to the left auricle. So this is a very simple video, guys. If you're still not able to understand, pause the video, draw the diagram on your own, and then make it work. It will definitely happen. You will definitely understand the video. So it is very simple. I hope you guys like the video. Please like this video, subscribe to my channel, guys, and so that click the bell icon so that you get every other notification when my video is being uploaded. Thank you, guys, and keep on watching. Take care.